In sport, sacking comes easy. The first sign of pressure, a team not performing. It's time to look out for a scapegoat. And the first person in sight is always the coach. Nowhere in the world does club or a federation official sack himself. It's always the coach. Igor Stimac was no different. Yet, after some time you realize, later at some other tournament, that you have been running on the same spot for years. Like hours on a treadmill, miles clocked, but you are on the same goddamn spot. हमारा एम ये होना चाहिए, जो भी बंदा आ रहा है उसको जज करना चाहिए कि हमारे जूनियर टीम्स कैसी खेल रही है, बिकॉज सीनियर टीम्स को तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते हो. कब इंडिया सुनेगी? सी, इंडियन फुटबॉल फैंस आर आल्सो लाइक आवर क्रिकेट फैंस. दे आर ओनली लुकिंग एट द टॉप. एंड कि अगर इंडिया फुटबॉल टीम अच्छा करेगी, सीनियर टीम, तो वी आर डूइंग वेरी वेल. इफ द इंडियन सीनियर फुटबॉल टीम इज नॉट डूइंग वेल, वी आर नॉट डूइंग वेल, व्हिच इज नॉट द केस. तो इसका मतलब 10 साल के बाद आप यही बात कर रहे होगे, कोई नया इगोर स्टीमैक आएगा, आप फिर उसको निकालने की बात कर रहे होगे. फिर उसके बाद 5 साल के बाद उसका एक और कोई नया आएगा. इगोर मतलब कोई और कोच लेके आओगे? एनीबडी. We know he has done wonderful distinct coaching, and it will take what you called a time to replace. But the federation, sure, federation is on the job to do the needful, because there's a lot of public cry, and a lot of fans are telling Indian coaches deserve to be there, but then we need to analyze in a very professional manner whether they are ready today to take the realm of the teams and national team, and can they deliver? Because compared to Stimac, see, the Stimac, we need to know the background. See, he has played all over Europe, yeah, and his team, Croatia. It's unfortunately, my opinion does not matter. And unfortunately, bhai, none of the Indian football fans' opinions matter. I would overhaul the entire system. I would change the coaching system, not from the top, from the bottom to the top. तेरे को हम दे रहे हैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट. You will be with India from under 14 to under 19. These are your boys. Develop them. And then we have उसकी accountability, transparency कब देखनी है? 22 वर्ल्ड कप हुए हैं, सारे के सारे कोच जो वर्ल्ड कप जीते हैं वो अपनी कंट्री से आए. क्यों? आपको क्या प्रूफ मिला है? आप क्यों सोचते हो ऐसे? क्या प्रूफ मिला है आपको ऐसे सोचते हुए? स्टीफन ने हमारे को क्या दिलाया था? Igor का तो पता है ना आपने क्या हुआ. So I would say that we should, after Igor, we should not go for a foreign coach, and it will be the biggest mistake we make. And we should go for our own coach, who we have already groomed so well. We need to be very clear what is our level today and where we can reach and what is required, and who is the best person to lead it. You have to make sure your national team gets the maximum advantage. कि अगर तुम बार्सिलोना को लाके यहाँ पे तो गर्मियों में खिलाओगे तो उनकी फट जाएगी. मेसी क्या जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए वो भी नहीं खेल सकेंगे at 32-35 degrees.